Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. In the previous lesson, we discussed the essay The Eclipse. Hope you have understood the main points of the lesson. Today we will discuss the important questions of the eclipse. Question number 1. Describe the scene of people's journey towards the north. इस क्वेश्चन के आंसर में आपने क्या लिखना है कि वो सारा सीन जब लोग नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहे थे उस वक्त क्या क्या हुआ जैसे ही the way the writer has explained it, you have to write the answer to this question. So we will start with the introductory paragraph. Virginia Woolf was a distinguished essayist who possessed a brilliant imagination and a creative intelligence. She was a sensitive artist who went deep down into the nature and origin of the things and recorded her observations in a keen and subtle way. So, first paragraph is about the writer. She described her experience about a June night when everybody in England was curious to witness the solar eclipse. It was to take place very early in the morning and could be clearly seen in the north of England. So a very large number of people traveled to the north for this purpose. So राइटर ने अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किया है जून का जब वो सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए पूरे का पूरा इंग्लैंड क्यूरियस था क्योंकि इक्लिप्स नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में विजिबल होना था इसलिए बहुत बड़ी तादाद में लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल उन्होंने क्या किया वो नॉर्थ की तरफ गए ताकि वो इस इक्लिप्स को ऑब्जर्व कर सकें. All were on the roads. There was no sleep or fixity in England that night. Everyone was thinking about the dawn. Some people were traveling in their cars and some in trains. Everyone was pointing to the north. The atmosphere was full of excitement and anticipation. Anticipation जब आपको किसी exciting चीज़ के होने का इंतज़ार हो. So everybody was on the roads. कोई सो नहीं रहा था कोई सुकून से फिक्सिटी मीन्स इन वन प्लेस सो कोई भी एक प्लेस पे नहीं था एवरीबॉडी वाज ट्रैवलिंग सबके सब सुबह के बारे में डॉन के बारे में सोच रहे थे एंड some people were using their cars some people were going by trains everyone was going pointing to the north means everybody was going towards north and the entire atmosphere was that people were excited, they were anticipating the eclipse, so it was an exciting atmosphere. The sky gained too much importance that night. As the time was advancing, the consciousness about the sun and the sky was increasing. At that day, people were thinking only about the sun and their relation with everything was completely changed. So, स्काई जो था उसकी इम्पोर्टेंट उस नाइट पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वाई बिकॉज पीपल वर लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई और जो जो टाइम गुजर रहा था एडवांसिंग मीन्स गुजरना सो लोगों की जो कॉन्शियसनेस थी जो अवेयरनेस थी सन को लेके और स्काई को लेके वो बढ़ती जा रही थी उस दिन जो लोग थे वो सबके सब सन के बारे में सोच रहे थे और हर चीज़ के साथ जो उनका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी वो टोटली चेंज हो गई थी बिकॉज ऑफ द इक्लिप्स. They were related to the whole world. Their experience was universal and cosmic. They had gone there for a disembodied intercourse with the sky. The activity and furor of these people was only due to their concern for the world and its future. That's why they traveled in a large number to witness this natural phenomena. Cosmic means something that is related with the यूनिवर्स डिसएम्बॉडीड जिसमें जिस्म इन्वॉल्व ना हो इंटरकोर्स यानी बातचीत करना फरोर हंगामा जोशो खरोश फिनोमेना मीन्स कोई भी जो चीज़ जो नेचुरली होती है मंजर या कोई भी कॉन्सेप्ट उसको हम फिनोमेना कहते हैं
सो वो सब के सब पूरी दुनिया से रिलेटेड थे, वो अकेले नहीं थे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के साथ वो इक्लिप्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। वो स्काई के साथ बात करने के लिए गए थे, एक ऐसी बातचीत, एक ऐसी डिस्कशन, एक ऐसी टॉक जिसमें बॉडीज इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि दैट टॉक वाज फ्रॉम माइंड टू माइंड और फ्रॉम स्पिरिट टू स्पिरिट। और इन सब लोगों की जो एक्टिविटी थी, जो जोशो खरोश था, जो एनर्जी थी, ऑल दैट वाज बिकॉज दे वर कंसर्न्ड अबाउट द वर्ल्ड और उसके फ्यूचर के बारे में। इसीलिए वो इतने लार्ज नंबर्स में ट्रैवल करके गए थे ताकि वो इस नेचुरल फिनोमेना को देख सकें। So their purpose for going there was because they were worried that if there was no sun, there will be no life on earth. So that is all about question number 1. Now we will talk about question number 2. Describe the atmosphere before the eclipse. First, first of all, in this question, you have to discuss all that happened on the moor बिफोर द एक्लिप्स, यानी उस मूवर पे जहाँ पे लोग इकट्ठे थे, वहाँ लोगों ने वो सब कुछ जो किया, जो इक्लिप्स के पहले हुआ, वो सब का सब इस क्वेश्चन के आंसर में हम डिस्क्राइब करेंगे। So first of all, obviously, introductory paragraph. On a June night, a large number of people traveled to the north of England to view the solar eclipse. People were full of excitement and curiosity. Their motive was same, as was their destination. Everything looked pale before the eclipse. The river and fields were colorless, the flowers waved palely. तो जून नाइट को बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे। वाई? बिकॉज दे वांटेड टू व्यू द सोलर इक्लिप्स। लोग जो थे वो एक्साइटमेंट से भी भरे हुए थे और वो क्यूरियस भी थे, यानी उनमें तजस्सुस भी था। उनका मोटिव यानी जो पर्पस था वो एक था, और उनकी जो डेस्टिनेशन यानी जो मंजिल थी वो भी एक थी। हर चीज़ पेल लग रही थी इक्लिप्स से पहले, कलरलेस लग रही थी। रिवर, फील्ड सब कलरलेस लग रहे थे। फ्लावर्स हिल रहे थे, लेकिन ऐसे लगता था जैसे उनमें कोई कलर ना हो। Nothing was clearly visible. People had gathered from far and wide of England, and this congregation presented a strange scene. The farmers of that area also joined the procession of the eclipse watchers. They had a sense of keeping an appointment with an actor of such vast proportion, who would come silently and be everywhere. The ignorant ladies of that area were unable to understand the motives and activities of this procession. Nothing was clearly visible means that people could not see clearly. People had gathered from far and wide of England, and this congregation means majmua ya hujum. और ये पूरे का पूरा जो कंग्रीगेशन था यानी लोगों का हजूम था, वो बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। उस एरिया के जो फार्मर्स थे वो भी उस हजूम में शामिल हो गए थे, उस प्रोसेशन में शामिल हो गए थे, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्टेड टू सी वट दीज पीपल वॉन्ट टू सी। उन लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग थी जैसे वो किसी इंपॉर्टेंट एक्टर के साथ मिलने जा रहे हों, और वो एक्टर इतना बड़ा हो कि वो हर तरफ मौजूद होगा। और वो जो इस एरिया की इग्नोरेंट लेडीज़ थी जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। People were standing on a high hill above a brown valley. Everyone was overdressed due to cold, but still it was too cold because they were standing on a wet spongy ground almost in a swamp. Some people were sitting on their nylon coats and were eating among cups and plates. No one was an individual there. They had lost all the signs of individuality. So, लोग जो थे वो एक हिल के ऊपर थे और वैली नीचे ब्राउन लग रही थी बिकॉज सन नहीं था, तो कलर्स भी नहीं थे। हर किसी ने बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए थे, ड्रेसेस पहने हुए थे, ओवर ड्रेस थे। वाई? बिकॉज इट वॉज कोल्ड। और इसके साथ साथ जो ग्राउंड थी वो भी गीली थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक स्वाम्प यानी दलदल में खड़े हों। कुछ लोगों ने अपने नायलन के कोट ज़मीन पे बिछाए हुए थे और वो उन पे बैठे हुए थे, एंड दे वर ईटिंग। कोई भी उस वक्त वहाँ पे इंडिविजुअल नहीं था, किसी की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। सबके सब वहाँ पर अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खो चुके थे। ऑल ऑफ देम वर वन। They had become
the emblems of a collective human mind and sensibility. Emblem means symbols, निशान. So उन ऐसे लग रहा था जैसे वो सारे के सारे एक कलेक्टिव ह्यूमन माइंड हूँ, एक कलेक्टिव ह्यूमन सेंसिबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू सेंस थिंग्स. दे लुक्ड वेरी डिग्निफाइड. वो बहुत डिग्निफाइड यानी बावकार लग रहे थे. इट सीम्ड एज दे वर द स्टैचूज ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन द वास्ट रिज ऑफ द अर्थ. बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ह्यूमैनिटी पूरी की पूरी स्टैचू बन के अर्थ के रिज यानी उसके किनारे पे आके खड़ी हो गई हो. They thought themselves to be very old. They looked like the members of the sun worshippers of primeval age who used to gather on a certain place in Stonehenge to worship the early morning sun. At the time of solar eclipse, they thought that their sun god was annoyed, so they made different sacrifices and tried to please their god. जो लोग वहाँ जमा थे उनको बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ओल्ड हूँ और वो उन लोगों की तरह से हूँ जो सन को वर्शिप करते थे. प्राइमेवल एज मीन्स पुराने ज़माने में. और वो सब के सब स्टोन हेंज वो प्लेसेस थे जहाँ पे सन के वर्शिपर्स इकट्ठे होते थे. तो वो वहाँ पे जमा है एंड दे आर गोइंग टू वर्शिप द सन, क्योंकि उस टाइम पे जब भी इक्लिप्स होता था तो लोग बिलीव करते थे कि उनका सन गॉड उनसे नाराज़ हो गया है. सो वो डिफरेंट सेक्रीफाइसेस देते थे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते थे ताकि उनका सन गॉड उनसे राज़ी हो जाए और वापस आ जाए. Virginia thought that they also looked like those worshippers because they had also religiously undertaken this journey to salute the dawn. Meanwhile, the sun was rising. So वर्जीनिया को वो इसलिए भी सन वर्शिपर्स की तरह लग रहे थे क्योंकि वो स्पेशली एक पर्टिकुलर टाइम पे उस जगह जमा हुए थे जहाँ पे वो सूरज को निकलते हुए देख सकें, और इसी के दौरान सन ने राइज करना शुरू कर दिया. Its rays fell on the earth, but soon the clouds held it and its face was completely covered with a thick blanket of clouds. The sun was trying to get free before the sacred seconds of the eclipse were up. So it was the scene that led to the actual scene of the solar eclipse. So इस scene की वजह से ये एक ऐसा scene था जहाँ पे जिसके end पे eclipse start हो गया. Now question number 3. Describe the scene of eclipse. So इस क्वेश्चन में हम वो सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे जो इक्लिप्स के दौरान हुआ. At the moment of sunrise, the clouds gathered round the sun and covered it fully. The sun violently tried to get itself free. Violently means पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ. For some moments, the clouds subsided and the sun shone with its full splendor. The valley and trees regained their colors, but soon the clouds started a race again. So जब eclipse start हुआ तो ऐसे लगा जैसे सन के आगे क्लाउड्स इकट्ठे हो गए हों और उन्होंने उसे कवर कर लिया हो. सन ने कोशिश की उससे निकलने की और कुछ मोमेंट्स के लिए ऐसे लगा कि जैसे सन उन क्लाउड्स से बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर उन क्लाउड्स ने उसे पूरी तरह कवर कर लिया और ये रेस दोबारा स्टार्ट हो गई. They tried to muffle its face completely. Muffle means cover. The sacred time of 24 seconds began. So 24 seconds थे जिनके दौरान eclipse ने रहना था और वो 24 seconds start हो गए. The sun were raising The sun was racing frantically to come out of this darkness. Frantically means बहुत ज़्यादा घबरा के, बहुत ज़्यादा कोशिश के साथ. Clouds spread, they thickened, and it seemed as if the sun would never be able to show itself. People got disappointed and thought that they would not be able to witness the eclipse. So लोगों को ऐसे लगने लगा कि जैसे सूरज अब वापस नहीं निकलेगा. All realized that the sun was being defeated. The colors went away from the valley. Out of 24, only 5 seconds of eclipse remained. Still, the sun was obscure. People were extremely dejected and they turned away from the dull cloud blanket in front to the moor behind. So, सब लोगों को ये लगा कि जैसे सन को डिफीट हो गई हो और वैली के कलर्स अब कभी वापस नहीं आएंगे. 24 सेकेंड्स में से सिर्फ 5 बाकी रह गए थे और सन अभी तक वापस नहीं आया था. सो पीपल फेल्ट डिजेक्टेड मीन्स पीपल फेल्ट सैड.
ऐसे लग रहा था कि जैसे डल क्लाउड जो है वो मूवर को पूरी तरह से कवर कर चुका है. All were pale, all were livid, but they felt that something more was yet to come. Shadows became darker and darker. The flesh and the blood of the world were dead. Only the skeleton was left. Suddenly, there was a slight movement, and the sun was able to rescue itself. So, सब पेल थे, सब लिविड थे, यानी ऐसे लग रहा था जैसे उनमें ब्लड ही ना हो. सब स्केयर्ड थे, लेकिन उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे अभी कुछ और होना बाकी है. शेडोज डार्कर और डार्कर होने लग गए. अर्थ बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे वो डेड हो गई हो और उसका फ्लैश और ब्लड ख़त्म हो गया हो. और फिर सडनली एक हल्की सी मूवमेंट के साथ सन ने दोबारा से नज़र आना शुरू कर दिया. It slowly and gradually came ahead. All the humiliation and disgrace of the sun was over. So राइटर को लोगों को ऐसे फील हो रहा था जैसे सन की इंसल्ट हो रही हो, उसकी डिस्ग्रेस हो रही हो, लेकिन अब वो डिस्ग्रेस और इंसल्ट ओवर हो चुकी थी. The light returned. It seemed that the life on the earth had been reshaped. The sun regained its grandeur and splendor. So sun अपनी पूरी शान के साथ दोबारा से चमक रहा था. This gave a new vision to people that the earth is made up of colors and the colors are due to the sun. If there is no sun, there is no life. So the importance of sun should be realized. This was a thrilling experience about the earth and its sun. So that's all. I'm going to give you an exercise question that you have to find the answer to and write it down and send it by tomorrow. What is the conclusion of this essay, or what is the significance of conclusion of the essay? Try to be on time and send your answers by tomorrow. That is all for today. Allah Hafiz.